everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your class, that is your GK and important facts class, जो कि क्लास नंबर आपका 94 है. ऑलरेडी 93 हम लोग क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने 2824 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है. ये सेशन जो आज का क्लास है वो आपके लिए क्वेश्चंस के जगह पे मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज देना चाह रही हूँ, जो कि जनरल नॉलेज के साथ साथ कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी नॉलेज है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट यू विल बी गोइंग थ्रू विद वन ऑफ द फॉलोइंग्स. ओके, सो बेसिकली ये एक जनरल नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लास है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पहले पता चल जाएंगी एंड यू कैन ईजिली एडमायर दैट थिंग्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो. नाउ स्टार्टिंग विद द टुडेज सेशन दैट वी हैव हियर 2825. Noted Bengali folk singer अमरपाल dies in कोलकाता. तो जो कि आपके बंगाली फोल्क सिंगर हैं अमरपाल, वो भी रिसेंटली डाई हुए हैं, उनकी डेथ हुई है कोलकाता में. 2826 एशियन एथलेट्स चैम्पियनशिप begins in दोहा. तो बेसिकली एशियन एथलेट चैम्पियनशिप जो है वो आपका बिगैन हुआ है इन दोहा. Next question, next one that we have here, 2827. Naval Commanders Conference was held first, that is January 2019. Naval Commanders Conference. Next question, that is your 2828. Bhopal gas tragedy among the world's major industrial accidents of 20th century UN. तो बेसिकली यूएन ने ये बोला है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो आपकी दुनिया की सबसे मेजर इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स में से है जो कि 20th सेंचुरीज में हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1829. Malala Pen's new book We Are Displaced on Refugee Girl. Malala's pen जो इनकी न्यू बुक है We Are Displaced, वो आपके रिफ्यूजी गर्ल पे है. Next one is 2830 here, that is भारतीय प्रवासी डे और नॉन रेसिडेंट डे. भारतीय प्रवासी डे जिसे हम कहते हैं और आपका नॉन रेसिडेंट डे इन इंग्लिश, सो दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of January. Next question, that is question number 2831. वर्ल्ड हिंदी डे. वर्ल्ड हिंदी डे हम लोग कब मनाते हैं? हिंदी दिवस जिसे हम कहते हैं वो है 10th of January. Next one that we have है 2832. सिविल सर्विस डे. सिविल सर्विस डे हम लोग कब मनाते हैं? सिविल सर्विसेज डे जो है वो 21 अप्रैल को हम मनाते हैं. Next question, that is question number 2833. Indian Navy launches guided missile destroyer in Imphal. बेसिकली अगर बात करते हैं इंडियन नेवी लॉन्चेस के बारे में, तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल में. नेक्स्ट इज योर 2834. माउंट अगंग वोल्केनो इन बाली एरप्ट्स अगेन. ऑल इंडिया रेडियो वालों ने बताया था कि जो माउंट एगंग वोल्केनो है जो आपका बाली में इरप्ट किया गया था फिर से. Next question, that is your question number 2835 that we have here. 2835. Odisha Chief Minister Naveen Patnaik announced interest of free loan of up to rupees 3 lakh for 6 lakhs women self-help group, that is WSHGS, benefiting about 70 lakh women in Odisha. उड़ीसा जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं उन्होंने अनाउंस किया था इंटरेस्ट फ्री लोन, जो कि उन्होंने 3 लाख रुपीस का था और 6 लाख वुमेन लोगों को दिया था उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जिन्होंने अब तक की 70 लाख वुमेन्स को उड़ीसा में बेनिफिट किया है. Next one that we have here 2836 here. Last captive white tiger Baji Rao dies at 18. एंड दैट इज ऑल इंडिया रेडियो ने बताया था कि लास्ट जो कैप्टिव वाइट टाइगर बाजीराव है वो 18 उन पे डेथ हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2837. इंडियन बॉक्सर्स विन 6 medals at 36th Felix Stammen International Boxing. This is news according to the Business Standard here. Next one is year 2838.
Indian boxers finishes with a rich haul of 6 medals, including the 2 gold at the 36th International Boxing Tournament in the Warsaw, Poland. Next is your 2839. Gaurav Solanki and Manish Kaushik bagged 1 gold each. So basically, they had bagged Gaurav Solanki and Manish Kaushik bagged 1 gold medal each. Next one that we have here 2840. Indian boxer also clinched a silver and a 3 bronze. They had clinched you know 1 silver as well as 3 bronze also. 2841, the 22 years old Solanki outpunched England William Colley 5-0 in 52 किलोमीटर कैटेगरी. सो 22 ईयर्स के सोलंकी जो हैं उन्होंने पंच किया था इंग्लैंड विलियम कॉले को, जो कि 5-0 से हुआ था 52 किलोमीटर कैटेगरी में. Next question, that is question number 2842. In the 60 kg weight category, Kaushik beat Morocco Mohammed Hamount, that is 4-1. Next question that we have your question number 2843. Now, here you can see that for the 2843, Myntra appoints Virat Kohli, Anushka Sharma as the first brand ambassador. बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से ये न्यूज़ आई थी कि जो मिंत्रा है उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. वॉलमार्ट ओन्ड मिंत्रा, वॉलमार्ट ने ही मिंत्रा को ओन किया है. हैज अपॉइंटेड इंडियन कैप्टन विराट कोहली एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एज द ऑनलाइन फैशन कंपनीज फर्स्ट ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर. The duos would help the company launch a brand campaign for shopping on the firm's e-commerce platform. Also that this is the largest ever brand campaign for Myntra, where it is strategy to reach the 100 million potential customers. Okay, so Myntra has been owned by the Walmart, and they had appointed the Anushka Sharma and Virat Kohli, the Indian captain, as well, and they had hired both of them because of the company launches their brand campaign for that shipping of forms of e-commerce company. And even though they had a brand company, this is a brand company, the largest brand company, and which had a target to reach 100 million potential customer. The next one is 2847. CEA included in Finance Panel Advisory Council, that is by the Money Control. For 2848 here, that is Chief Economic Advisory Krishna Murthy Sitaraman Nyam has been included in the Advisory Council of 15th Finance Commission as its member. 2849 here, the Advisory Council was set up in April 2018 to the advisory the commissioner or any issue or subject related to the terms of the reference, that is TOR, of the commission here. Next one that we have here 2850 here, that we have here that in December 2018, here we have 2850 here. In December 2018, the government appointed the Subramaniam of Indian School of Business, that is ISB, Hyderabad, as the Chief Economy Advisor and the Finance Ministry for the 3 years. So Subramaniam को उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से अपॉइंट किया था हैदराबाद में. Now moving on with the next that we have here. 2851, the 15th Finance Commission was contributed in November 2017. तो 15th Finance Commission जो contribute हुआ था वो November 2017 में हुआ था. Next question, next one that we have here 2852. The role of the commission is to give the recommendation for the deviations of taxes and other fiscal matters to the central government for the 5 years commencing from 1st April 2020. चेयरमैन जो है वो NK सिंह है आपके.
For the next that we have here 2854, Indian Navy launches the fourth Scorpion class. So the next one we have a 27,854. Indian Navy launches the fourth Scorpion class submarine, that is by the business standard they had told. The fourth Indian Navy stealth Scorpion class submarine by the Project 75 was launched at the Hazargon Oak and of course limited at Mumbai in Maharashtra. Next question, that is your question number 2856. The submarine has been named Veta after the earlier submarine. तो basically submarine जो है वो आपका named Veta as Veta named किया गया था before the earlier submarine. Next one that we have here 2857. The steel cutting for this submarine commenced in July 2009. The submarine has completed joining of all its section. बेसिकली अगर हम बात करते हैं कोई भी स्टील कटिंग जो कि सबमरीन कमेंस्ड हुआ था वो जुलाई 2009 में हुआ था और सबमरीन जो है वो कंप्लीट हुई थी सारे अपने सेक्शन को ज्वाइन करके. In the case next one that we have here 2858, the submarines are being built at the Mazagon Dock Limited with the main collaboration between the M/S Novel Group and in France. Next one that we have here. Next question, that is question number 2859. E-commerce services India ties up with IIT Kanpur to upscale उन्नत भारत अभियान. ऑल इंडिया रेडियो ने बताया था जो ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं जो आपके इंडिया के, तो वो उन्होंने टाइज अप किया था आईआईटी कानपुर के साथ कि वो जो उन्नत भारत अभियान है उसको इसके अपस्केल कर सके. 3860 कॉमन सर्विसेज सेंटर जिसे हम CSC बोलते हैं, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड हैज टाइड अप with Indian Institute of Technology, that is IIT Kanpur, to upscale Unnat Bharat Abhiyan. Next one is your 2861. उन्नत भारत अभियान is an initiative. उन्नत भारत अभियान है क्या एक्चुअली? ये एक इनिशिएटिव है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ HRD. HRD का ये एक इनिशिएटिव है दैट इट एम्स टू फाइंड द सोल्यूशन टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल ग्रोथ इन द रूरल इंडिया. रूरल इंडिया में एक सस्टेनेबल ग्रोथ करने के लिए आपका उन्नत भारत अभियान एक इनिशिएटिव लिया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के थ्रू लिया गया है. Next question, next one that we have here 2862. Under the Unnat Bhagat Abhiyan, IIT Kanpur has brought together 15 leading higher education institutes from Uttar Pradesh. उन्नत भगत अभियान के थ्रू आईआईटी कानपुर ने 15 लीडिंग हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं उनको उत्तर प्रदेश के लेके आया, उत्तर प्रदेश से लेके आया. Next one that we have here 2863. These institutes will adopt Gram Panchayat and equip them with all citizen-centric services called CSCs. तो basically जो all institute है ना वो सारे adopt उन्होंने ग्राम पंचायत को adopt किया and even though they have all citizen-centric services through the CSCs. Next one that we have here that is 2864. First Japanese commercial rocket launch reaches orbit, that is DD न्यूज़ ने बताया था कि फर्स्ट जापानीज जो कमर्शियल रॉकेट है वो लॉन्च किया गया जो कि एक्चुअली में ऑर्बिट में पहुंचा. नेक्स्ट वन दैट वी हैव रिगार्डिंग दिस ओनली. If we are talking about the rocket, Japanese rocket only 2865, a Japanese aerospace startup funded by the former internet Maverick successfully launches a small rocket into the space. Where 2866 one here, it is the first commercial developed Japanese rocket to reach the orbit. ये first commercial developed Japanese rocket था जो कि orbit में पहुंचा था. 2867, Interstellar Technology Inc. said that unmanned Momo 3 rocket exceeded 100 kilometers in altitude before falling into the Pacific Ocean. Pacific Ocean में fall होने के पहले वो 100 kilometers altitude पे गया था Momo 3 rocket. Next one, that is your question number 2865 here, sorry 68 here. This is found in 2013 by the Hori, former Livestock co-president. Stellar Technology aims to develop the low-cost commercial rocket to carry the satellite into the space. So he is the one
he is the one that he had taken this stellar technology. He is the president of this particular, so they had made a low cost commercial rockets to carry that particular into the space. 2869 Vodafone Idea signs multi-millions dollar IIT deals with IBM. Vodafone Idea जो है, जो कि अब कोलैबोरेट हो गया एक साथ, तो उन्होंने मल्टी मिलियन डॉलर आईआईटी आइडियाज़ को जो आईटी डील्स हैं उनको आईबीएम के साथ ज्वाइन किया है. With respect to this, only 2,870 point that we have, India's largest telecom operator, Vodafone Idea Limited, announced a 5-year multi-million dollar IT outsourcing deal with tech giant IBM. Tech giant IBM के थ्रू उन्होंने डील किया है आईटी आउटसोर्सिंग के लिए, जो कि आपका वोडाफोन और आइडिया ने किया है, जिन्होंने अनाउंस किया था 5 साल का मल्टी मिलियन डॉलर आईटी आउटसोर्सिंग डील के लिए, जो कि उन्होंने आईबीएम के थ्रू किया है. Next, moving on with next that we have here, 2871 here. The collaboration will contribute to the Vodafone Idea merger synergy objective by the decreasing of IT related cost. Next one that we have a question number 2872. This partnership will offer the Vodafone Idea with a hybrid cloud-based digital platform to enable the engagement with its 387 million subscribers as well. Next one that we have here, 2873. LIC HFL launches the Udhyam Center, that is LIC HFL ने Udhyam Center को launch किया था, and for the launching Udhyam Center we have LIC Housing Finance, LIC HFL has launched Udhyam, a skill center in Bangalore. They had launches in Bangalore. Next one that we have here, 2875. It was launched in the association with the Lok Bharati Education Society. 2876. The Centers of Excellence will provide training to the marginalized youth in the BFSI, retail and ITE sectors. Okay. सो हेयर यू कैन सी दैट जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस उन्होंने प्रोवाइड किया ट्रेनिंग में, वो उन्होंने बेसिकली BFSI, रिटेल, IT और IT सेक्टर्स में ही इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक्सलेंस दिया. नेक्स्ट इज 2877. हेडक्वार्टर इसका आपका LICHFL का हेडक्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र में है, और उनके CEO जो हैं वो विनय शाह है. Next one that we have here, 2879. India's Navy frontline missile destroyer INS Ranjit to be deaccomplished. बिजनेस स्टडीज ने बिजनेस स्टैंडर्ड ने बोला था कि जो इंडियन नेवी फ्रंटलाइन मिसाइल है, जो कि INS रंजीत है, वो डिकम्युनिश्ड हुई थी, और जो कि एज एन इंडियन वी ऑल्सो नो दैट वी हैव दिस मिसाइल INS रंजीत. And now we'll talk about this more further. INS Ranjit at 2880 here. INS Ranjit, the Indian Navy frontline missile destroyer, will be decommissioned at the naval dockyard in Visakhapatnam on 6th May. विशाखापट्टनम में 6th May में ये decommissioned हुआ था. 2881. It had saved the Indian Navy for 36 years. इसने आपको Indian Navy को 36 सालों के लिए इसको सेव कर लिया. 2882. INS Ranjit was the third of the fifth Cassions class destroyer built by the erstwhile, that is VSSR, and was commissioned in 1983. INS Ranjit जो है वो आपकी थर्ड है, वो 5 Cassion class destroyer बिल्ड जो हुई थी उसमें से, और आपका erstwhile VSSR जो आपका है that was commissioned in 1983. Next one that we have is 2883. INS Ranjit was at the forefront of keeping the nation secure and participating in a number of operations. INS Ranjit जो है वो basically इस वजह से आगे आया, इसको लेके आया गया क्योंकि ये नेशन की सिक्योरिटी के लिए लेके आया गया, और वो ये पार्टिसिपेट कर सकता है नंबर ऑफ ऑपरेशंस में एज वेल. 2884. Defense Ministry approves the Navy's rupees 3,600 crore deals with Russia for 10 Kamov 31 helicopters. 2885 here. The Defense Ministry has approved the procurement of 10 Kamov 31 airborne early warning of the central helicopter for the Indian Navy. 2886. The cost of the deals would be around, जो cost of deal हुई थी हम लोग दोनों के बीच में,
रशिया और इंडिया के बीच में, तो बेसिकली वो हुई थी 3600 करोड़ की। Next one that we have a 2882. The 10 helicopters would be deployed on the aircraft carriers and the warship the Navy, including of INS Vikrant and the Grigovich class of frigates. Next, moving on to the next one that we have a 2888 here. 2888, the Navy has a fleet of Russian Kamov 28, that is choppers, which were procured in 1980s and need to be upgraded for the future operation as well. Next one that we have is 2889. Asia Pacific economics are set to grow the steadily at 5.7%, that has been told by the ADB. 2890 here, that is according to the bank's Asian Development Outlook 2019 report released in April. Develop Asia is a project to grow 5.7% this year. 2891, that Mr. Nakao said that the consumer and the investors' behavior could be undermined by the trade tensions between the countries as well. 2892, they told that the bank's lending grew to the record of $21.6 billion in 2018 and 10% higher compared to the 2017. 2893 headquarter that we have here for this is the Mandaluyong of Philippines, and of course they are founded in December 1966, and the membership is 68 countries are the membership of this. Next one that we have here 2896, वर्ल्ड्स लाफ्टर डे। वर्ल्ड्स लाफ्टर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है तो वो आपका मई 2019 में किया जाता है। 2019 में 5th मई को पड़ा था। It is not compulsory that is will be held on 5th May only. This is the first Sunday of the May and 2019 में आपका 5th May को पड़ा था Sunday. Now moving on with next that we have here. So World Laughter Day, if I'm talking about the World Laughter Day, is celebrated on the first Sunday of the May of this year. It falls on 5th May. So basically it was held on Sunday, so the first Sunday of the May, and that is held on the 5th May in 2019. The first time this day was celebrated on the May 10, 1998. 10 May को celebrate first time हुआ था 1998 में by the Madan Katana in Mumbai. This day is marked to be spread laughter all around as it helps to warn many problems and that could be emotional or physical as well. Laughter is the best medicine and can cure anything. That you have to laugh every time with of course having a sense, and you can cure some of the medicines also and cure anything, and laughter is the best medicine as well. Next one that we have is 901. Shahid Afridi released his autobiography, that is Game Changer. तो शाहिद अफरीदी जो कि आपके पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था गेम चेंजर, टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू बताया गया. And 2902 that we have here. Former Pakistan cricket captain Shahid Afridi released his biography Game Changer. The book is co-authorized by the Afridi and journalist Wajahat S. Khan. When Afridi smashed a 37-ball century against the Sri Lanka in 1996, he not only registered the fastest ever one-day turn, he also became the youngest player to score 100 runs in an international. ओके सो क्लास आज जो हमने आपका जीके का क्लास किया है वो हमने क्वेश्चन के फॉर्मेशन में नहीं बल्कि हम लोगों ने एक फैक्ट के थ्रू उसको किया है. सो आई थिंक यू विल गेट ऑल दिस ऑल्सो. एंड अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.